Guys, turn on your webcam. Guys, turn on your webcam. Sudan, turn on your webcam. Otherwise, I will remove you. Sudam, you are attending first time my class, na? Ritik, turn on your webcam. Okay, Simranpreet Kaur, beta, and Manveer, just turn on your webcam. Manveer and Simranpreet Kaur. Manveer. Otherwise, beta, I will remove you. Manveer.
Mandeep, turn on your webcam, beta. Majinder. Harshita, turn on your webcam, beta. Maninder. Okay, guys, I am going to lock my room. So, Maninder, can you turn on your webcam, beta? Maninder, join it again, beta. Your cam is not working. Okay, guys, we will start the same topic what we did last time. So we will do the CBSE 2020 questions. Okay, the CBSE sample paper we have the 2020 question. So go to the page number 2.86. 2.86. In the 2.86, question number 26. Majinder, beta, turn on your webcam, otherwise I will remove you. So guys, in that question, just go through this question. A and B are the partner in the profit sharing ratio 3:2. The firm maintained the fluctuating capital account and the balance on the same day, on the same as on 31st March 2020, announced, amount to 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. They Their drawings during the year were 30,000 each. Drawing is 30,000 each. As per the partnership deed, interest on the capital 10% per annum on opening capital had been provided to them. They calculate the opening capital of the partner, give that their profit was 90,000. Show your working note clearly. So ये CBSE सैंपल पेपर का 2020 का बेटा क्वेश्चन है जो आपको करना है. Can you do that? Or I'll do for you. You have to find out the opening capital of the firm. Opening capital. Can you do that? Or I'll do for you. Maninder and Diya, open your beta webcam. Just turn on. Okay, beta. So I will do for you. So first of all, what we have to do, this is a CBSE 2020 question. So it has some tricks. So these tricks you have to also use for that. So can you try that one for? Just try it, huh? Otherwise, I will do for you. Okay, Majinder, can you try that one? This question, Majinder, can you try, beta? Just try it. After that, I will do for you. Ritik, okay, beta? Just try it.
Just try it. After that, I will do for you. Okay. Just try it, beta. Question number 26. Question number 26 you have to do, beta. It's written on the board. Question number 26. Sudhan Sharma, beta, can you turn on your webcam? Just try it, otherwise I will explain you, beta. After that.
Guys, done? Anyone have done better? Or I'll explain to you. Just WhatsApp me. Anyone have done it, or I'll explain to you. Okay, guys, I got the message. I have to explain it. So, so guys, I'm going to explain you. In this question, we have to find out the opening capital. Okay, because you know that I have told you so many times that you have to charge interest on the capital on the opening capital. We will calculate the interest on the capital on the opening capital, and in the balance sheet whatever the capital is given, that is the closing capital. That is the closing capital. जो क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी हुई थी कि 31 दिसंबर 31 मार्च 2021, दैट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल। और हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताया था। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल में आपको ड्राइंग जोड़नी है और आपको प्रॉफिट लेस कर देना है। ड्राइंग जोड़नी है और प्रॉफिट लेस कर देना है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है, अब फ्लक्चुएटिंग है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको माइनस करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ऐड करनी है, व्हाटएवर। सो वो सब चीजें क्लियर है आपको। तो इसमें हम सिंपल वाला फॉर्मूला लेंगे। तो हमारे पास कैपिटल गिवन है बेटा, हमारे पास कैपिटल गिवन है ए और बी की। सबसे पहले हमने टोटल कैपिटल निकाल ली ए एंड बी की 1,60,000 प्लस 1,40,000, सो दैट विल बी 3 लाख। तो सबसे पहले हमने 3 लाख ये लिख दिया। टोटल ड्राइंग हमने ऐड कर दी 60,000 रुपीस की, लेस कर दिया टोटल प्रॉफिट। ओके, टोटल प्रॉफिट लेस कर दिया, और लेस करने के बाद बेटा आपके पास आ गया 2,70,000। दिस 2,70,000 is the total opening capital. That is total opening capital. My point is clear to you, beta?
My point is clear to you, and in listen it again. We have total capital 60,000, 40,000. We club it and we wrote here. Next, drawings 30 plus 30. We wrote here 60,000, and we have subtracted the profit 90,000. We got the opening capital. After calculating the opening capital, we have calculated interest on capital. We have calculated the interest on capital, that is 27,000. ओके 27,000 रुपीज को हमने टोटल कैपिटल में, टोटल प्रॉफिट में से माइनस किया, सो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया जो हमें निकालना था। ये सारी कैलकुलेशन हमने इसलिए करी क्योंकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना था। जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ था उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। ओके, द पॉइंट हैज बीन क्लियर। हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया आपका 63,000। उसके बाद हमने वापस कैलकुलेशन करी इंडिविजुअल पार्टनर्स की कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, वही फार्मूला लगाया। कैपिटल ए 1,60,000, 1,40,000 we wrote separately. After that we wrote the drawings. See, we have written the drawings 30,000, 30,000 plus what we did, we subtracted the profit, the divisible profit. The divisible profit we have calculated 63,000. How much we have calculated the divisible profit? 63,000. 63,000 divided into the old ratio 3/5, 2/5. So whatever you will get, that will be the 3,580 and 25,000. Okay guys, after that you will find, after that you will subtract it, you will get the amount. In that amount you will subtract less interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बेटा आपका एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा 10/110। ओके बेटा, 10/110 बिकॉज इसमें आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है प्रॉफिट में। सो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 10/110, देन यू विल गेट 13836 and another one is 13182. Guys, clear this point? This point has been clear to you? Then find out the opening capital. बेटा हमने इसमें 1/10/110 इसलिए किया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी ऐड है। Interest on capital already added, that's why we did this one. Just go through this question. If you have any doubt, so I will explain you again better. I have WhatsApp you also. Just go through on the WhatsApp. If you have doubt, if you have any doubt, you can ask me. I'll explain you again. देखो बेटा, कोई अगर डाउट हो मुझसे पूछो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा।
Beta, on the question number, okay, can you do the question number 27? In the question number 27, see, in the question number 27, in the balance sheet, capital and current account is given. बेटा सी इन द क्वेश्चन नंबर 27, इसमें करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों गिवन है. ओके बेटा, सो अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन हो गया. किसका क्वेश्चन हो गया? फिक्स कैपिटल का. फिक्स कैपिटल की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है, तो आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिए, देन यू विल गेट द आंसर. तो कैपिटल कितनी 10 लाख पे आप बेटा कितना 5% लगा दिए और 10 लाख पे 5% लगा दिए, यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में करंट भी दे रखा है और करंट अकाउंट भी दे रखा है, कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है. इट मींस आपकी कैपिटल फिक्स्ड है. आपके कैपिटल फिक्स्ड है. फिक्स कैपिटल की ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहती है. तो अब आपका सिंपल सा कैपिटल, आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या हो गई? 10 lakh multiplied by 5 upon 100 for who is the first one? Nilkant. Okay, and another one is okay guys, that is clear to you beta? Go for another one. 27 is finished. Can you do the 28? Just try the 28, then I will solve for you.
Okay, guys, is this clear to you, beta? Sudan, done, beta? Done, Sudan, Ritik. Okay, take your time. Smriti, Sania, Rajpreet, Mandeep, done, beta? Just check it. Okay, guys, go for the next topic. That is remuneration, salary, commission to the partner. That is remuneration, salary and commission to the partners. This is the easiest most topic. बहुत easy topic है, you can do at home.
Listen it carefully, beta. It's a very easy topic, so you can do it very easily. Remuneration salary is allowed to the partner for looking after the business. वो उसको business, जो उसकी वो बिजनेस को बेटा देखता है, टेक केयर करता है, उसके लिए उसको बेटा सैलरी और कमीशन मिलती है पार्टनर्स को. इट इज अलाउड ओनली इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ. अगर ये पार्टनरशिप डीड में बेटा लिखा हुआ है तभी आप पार्टनर्स को सैलरी एंड कमीशन मिलेगा. इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है बेटा तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सैलरी और कमीशन, और तो कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल पार्टनरशिप डीड में जब तक नहीं रिटर्न होगा, नहीं मेंशन होगा, तो ये बेटा नहीं मिलेगा. इसका नेचर क्या होता है? पार्टनर, द सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड. इट इज आल्सो इन द फॉर्म एंड द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. So partner salary and commission to the partner is appropriation of the profit, not the charge against the profit. और ये बेटा appropriation of the profit है. appropriation of the profit, अगर profit होगा तो सैलरी और कमीशन दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा कि because this is not the charge on profit, this is charge on appropriation. जब appropriation पे होगा, जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आप सैलरी और कमीशन देंगे. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सैलरी और कमीशन नहीं देंगे. इसके दो मेथड हैं, आप समझ लिए बेटा. नंबर वन जो है बेटा इसका प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट before charging the commission. So net profit before charging the commission, that will be rate of commission upon 100. Second है percentage of net profit after charging commission. So इसमें क्या बेटा, नेट प्रॉफिट before commission is equal to rate of commission upon 100 plus rate of commission. Just go through, these are the two formulas. If it's before charging, so rate of commission upon 100. अगर आपका rate of commission 100, 10 rupees दिया हुआ, 10% दिया हुआ, 10 upon 100, so you can do that. 10 upon 100 you can do that. If clear, if अगर after charging दे रखा बेटा, if after charging is given, so what you will do, and 10 is equal to 10 upon 100 plus 10, so that is 10 upon 110. Okay, is this clear to you? It says if you have to find out the word after and before. If before profit is given, profit before charging commission is given, so you will do that. After is given, so you will do that one. Simple one is there. You can do all the question like that. That's a very simple. That's a very simple. So you can do all the question whatever given your book. 31 to 34 you can do that. Just do the homework 31 to 34. Nothing is that. Just go through the question number 1. Shiv, Mohan, Gopal are the partner, profit sharing ratio 2 to 1.
She is entitled to the commission of 10% on the net profit. Net profit is 1,10,000. Just find out the 10% of that. 1,10,000 multiplied by 10 upon 100, because it's not mentioned before or after. So you will, what you will go? You will go for before. You will go for before. So nothing is mentioned, so you go for before. So 10 upon 100, 1,10,000, 10 upon 100, so you will get 11,000. It's a simple answer, you will got it. Same type you can do all these questions. Okay, beta. If you have any doubt, so you can ask me. Okay, take care. Bye bye. I'm going to wind up my class. Okay. If you have any doubt, so you can ask me. You can WhatsApp me.